Everyone, so today we will start the new chapter and the name of the chapter is the temperate grasslands. Let's start the chapter. Chapter 8, Chapter 8, the temperate grasslands. My learning plant, prairies, vegetation, life of the people, location, animal life, climate, economic activities. Let's do the warm up. Identify and write the names of the marked heat zones. So here it is North Torrid Zone. It is South Frigid Zone. This is South Torrid Zone and this is Temperate Zone. This is also Torrid Zone and here it is Temperate Zone. Like this you have to complete this exercise. Now what are temperate zones lie between Tropic of Cancer and Arctic Circle or between Tropic of Capricorn and Antarctic Circle के बीच में lie करते हैं सारे zones. In the temperature zones में southern and the northern hemisphere tall grass जो होता है वो chief vegetation होती है और very few trees यहाँ पर grow होते हैं. Vast grassy areas को हम कहते हैं grasslands. Tidbits. टेम्परेट ग्रासलैंड लाई करता है टेम्परेट जोन में, उनको अलग अलग नाम से बुलाया जाता है इन डिफरेंट कंट्रीज. लाइक नॉर्थ अमेरिका में वी कॉल इट एज प्रेरीज, साउथ अफ्रीका वेल्स, साउथ अमेरिका पैम्पस, यूरेशिया स्टेपीज, ऑस्ट्रेलिया जाउन्स. Then comes the prairies. Prairie is a French word. It means meaning meadow or a grassland. Prairies वो regions होते हैं, they are of flat, gently sloping और hilly land. For the most part, prairies जो होते हैं वो treeless होते हैं. But near the low-lying plains, flowing river, valleys, woodlands, up they can be found. Prairies को हम sea of grass भी कहते हैं. Location. प्रेरीज लोकेटेड होते हैं इंटीरियर ऑफ नॉर्थ अमेरिका और लाई करते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड आर्कटिक सर्कल के बीच में. प्रेरीज स्ट्रेच होते हैं फ्रॉम टेक्सास स्टेट इन यूएसए टू द प्रोविंस ऑफ अल्बर्टा इन कनाडा. बिफोर द अराइवल ऑफ यूरोपियंस ये रीजन जो था इट वाज यूज्ड टू बी अ ग्रेजिंग ग्राउंड होता था फॉर एनिमल्स लाइक बाइसन. टुडे इट इज द बिगेस्ट फार्मिंग रीजन ऑफ द वर्ल्ड. द मिसिसिपी और मिसौरी दो बड़े बड़े रिवर्स हैं दैट पास थ्रू दिस रीजन. दे प्रोवाइड वाटर फॉर irrigation. Tidbit. Every continent except Antarctica has grasslands. Antarctica के अलावा हर continent के पास क्या है? Grasslands. Climate. The temperate zone receive करता है slightly slanting rays of the sun. तो इसीलिए वो cooler भी होता है, drier होता है than the areas in the torrid zone. There are longer days and shorter nights in summer and shorter days and longer nights in winter. दिन लंबे होते हैं, रात छोटी हो जाती है समर में और डेज छोटे हो जाते हैं और दिन लंबे लॉन्गर नाइट्स हो जाती हैं इन विंटर. टेम्परेट ग्रासलैंड्स जो होते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में वो एक्सपीरियंस करते हैं बहुत ज्यादा हॉट समर्स और वेरी कोल्ड विंटर. ग्रासलैंड जो सदर्न हेमिस्फीयर में होते हैं वो कोस्टल साइड में होते हैं, तो देयरफॉर वहां का क्लाइमेट कंपैरेटिवली थोड़ा माइल्ड होता है और क्रॉप्स वहां इजीली पूरे साल ग्रो की जाती है. चिनोक एक मॉइस्ट वार्म विंड है जो ब्लो होता है ओवर द प्रेरीज. ग्रासलैंड्स फाउंड इन नॉर्थ अमेरिका. बुरान एक नॉर्थ ईस्टर्न विंड है जो ब्लो करता है ओवर द स्टेपीज. ग्रासलैंड्स फाउंड इन यूरेशिया इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. चिनोक ब्लोज होता है इन द स्प्रिंग सीजन एंड हेल्प्स इन द मेल्टिंग ऑफ स्नो ताकि वो लैंड को सूटेबल बना सके फॉर ग्रेजिंग. वेजिटेशन. स्टेपीज रिसीव करती है लेस रेनफॉल देन द प्रेरीज, सो द ग्रासेस इन द स्टेपीज जो होते हैं वो शॉर्ट होते हैं कंपेयर टू द ग्रासेस जो ग्रो इन द प्रेरीज. Tall trees like those that grow abundantly in the rainforest were usually absent होते हैं in the grassland. Animal life. Large number of grazing animals found होते हैं in these fertile grasslands. Skunk, badgers, coyotes, antelopes, wolves and prairie dogs, commonly they are found here. Owls, eagles, hawks and falcons, they are common here. Rattlesnakes and bull snakes, they are very common. Bisons earlier found in large numbers in the prairies and almost extinct now because of indiscriminate
हंटिंग, कि लोग पीपल आर हंटिंग टू मच, तो हंटिंग की वजह से वो जो एनिमल्स हैं वो धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज, मेन एक्टिविटी जो इंक्लूड करती है होती है कल्टीवेशन कॉर्न का, मेज का इन द ईस्टर्न पार्ट, wheat in the central part and cattle rearing in the western part. Other important crops जो है ग्रोन होते हैं वो होते हैं बार्ले, राई, ओट्स एंड न्यूट्रिशियस गैस। फार्मर्स प्रोड्यूस करते हैं इनफ व्हीट को पूरी कंट्री के लिए और एक्सपोर्ट के लिए भी, और इसीलिए प्रेरीज को व्हीट बास्केट ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है, क्योंकि वहां पर सब पूरे वर्ल्ड के लिए वहां पर क्रॉप्स ग्रो की जाती है। और हर एक फार्म पर स्मॉल होम स्टेज होते हैं, लेबरर्स जो काम करते हैं फार्म पर तो वही रहते हैं, तो रुकते कम रूम्स बने होते हैं लोगों के लिए एक दो, जहां पर वो रह सके, क्योंकि उनको डेली दे हैव टू वर्क फॉर द कंप्लीट डे ऑन द इन द फील्ड्स, दैट्स व्हाई दे नीड सम रेस्ट आल्सो। लाइफ ऑफ द पीपल, पीपल ऑफ प्रेरीज बेसिकली फार्मर्स होते हैं, यूरोपियन सेटलर्स कन्वर्ट करते हैं ग्रासलैंड्स को फार्मलैंड्स में। एवरेज फार्म यहाँ पर स्प्रेड होता है थाउजेंड्स ऑफ हेक्टेयर्स में। फार्मर्स जो है वो अपनी फैमिलीज के साथ रहते हैं ऑन द फार्म। सरप्लस प्रोडक्शन हैज मेड फार्मर्स को रिच बनाया, उनके पास सारे मॉडर्न फैसिलिटीज हैं एंड कंफर्ट्स है नाउ। मेनी फार्मर्स रेयर कैटल फॉर मिल्क एंड अदर प्रोडक्ट्स, वो रेयर होते हैं फॉर देयर मीट एंड प्रोडक्ट्स लाइक मिल्क, बटर एक्सेट्रा। शिकागो एक इम्पोर्टेंट सेंटर है स्लॉटरिंग एनिमल्स के लिए, बिग डेयरी फार्म्स जो है वो डेवलप हुए, दे हैव मॉडर्न मशीन्स, इवन मिल्किंग जो है वो मशीन्स के थ्रू होती है। बहुत से डेयरी फार्म्स जो है वो सिटीज के पास है, बिग डेयरी फार्म्स के मॉडर्न फैसिलिटीज है फॉर प्रोसेसिंग द मिल्क, इवन मिल्किंग ऑफ काउज की जाती है थ्रू मशीन्स। तो दस इन द प्रेरीज मशीन्स हैव ऑलमोस्ट रिप्लेस्ड, मतलब मशीन्स की वजह से आज मैनुअल लेबर को रिप्लेस कर दिया गया है। बहुत सारे जो मिनरल्स हैं वो प्रेरीज में फाउंड होते हैं, लिग्नाइट, कोल एंड मिनरल ऑयल, ये सब माइंड होते हैं लार्ज क्वांटिटी। और क्रशिंग फैक्ट्रीज, ऑयल रिफाइनरीज, ये सब डेवलप हुई। इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज इन द प्रेरीज जो है वो मीट पैकिंग फैक्ट्रीज है, फ्लावर मिल्स है। पीपल लिविंग इन प्रेरीज कॉन्टिन्यूसली ट्राई करता है कि वो इम्प्रूव कर सके लाइफस्टाइल को यूजिंग साइंटिफिक डिस्कवरीज एंड न्यू टेक्नोलॉजीज। तो हाउएवर क्लाइमेट जो है वो स्टिल कंट्रोल करता है बहुत से इकोनॉमिक एक्टिविटीज। वेस्टर्न पार्ट प्रेरीज का वो हिली है एंड सॉइल इज नॉट सो फर्टाइल। Animals are reared on large open grasslands, that is called ranches. Let's do the new words. Grassland, area covered with grass. Homestead is a farmhouse where a farmer lives with his family. Quick bites. Prairie is a French word meaning meadow and grasslands. Prairies are known as the wheat basket of the world. Main crops produced in prairies are wheat, barley, oats, rye. Lignite, coal and mineral oil, they're found in large quantities in milling. Chicago is an important center for slaughtering animals. Animals are also reared on large area of grassland. Now comes to the work to do, tick the correct option. In South America, grasslands are called pampas. Which of the following rivers pass through the prairies region? Both A and B. A local wind called dash blows in the prairies grasslands, that is Chinook. Which of the following is an important center for slaughtering animals? Chicago. Let's do fill in the blanks. The vast grassy areas are known as grasslands. Prairie is a French word meaning meadow or grassland. Dash is an important center for slaughtering animals, that is Chicago. Dash is the most important crop of the prairies, wheat. Let's do the true and false. The steppes receives more rainfall than the prairies, false. Farmers live an uncomfortable life in the prairies, false. Western part of prairies is hilly, true. Prairies are also called the rice basket of the world, false. So I hope you all have understood this chapter. You can go through it again. We'll meet in the next video. Bye bye. Take care.